हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम IAS 2014 रैंक 47 जिन्होंने रोमन सैनी सर के साथ यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई किया था और उसी साल में उन्होंने लबासना में उनके साथ ट्रेनिंग करी थी, उनके अनुभव को इस वीडियो के साथ जानेंगे। ये वीडियो केवल प्रीलिम्स मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं है, बल्कि इस वीडियो में आप लोगों को खुद को ऑपरेट कैसे करना होता है यूपीएससी की तैयारी करते समय, उन बातों का भी हम आंसर देंगे। आप लोगों को पता है मैं अनअकैडमी पे भी आप लोगों को हिस्ट्री के कोर्सेस लाता हूं। अगर आप लोग अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हो, बहुत ही शानदार अवसर है, 20% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हो। नवरात्रा स्पेशल ऑफर चल रहा है, 30 तारीख को इसकी आखिरी डेट है। डू यूज माई कोड अनुज यूपीएससी इन केस यू वांट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। लेट्स क्रैक इट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पॉडकास्ट। सो हेलो डियर लर्नर्स, आप में से कुछ ने अभी ज्वाइन कर लिया है, कुछ अभी ज्वाइन करेंगे और कुछ इस पर्टिकुलर सेशन को जो जूम कॉल के माध्यम से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो इसको यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे। तो टुडे वी हैव विद अस अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट जो जिनका नाम श्री आदित्य सिंह जी है। आदित्य सर ने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को 2000, I think sir, 12 and 13 you started, and 2014 was the year when he got selected for the prestigious civil service examination. और सर का काफी एक अमेजिंग करियर रहा है अभी तक, और काफी सारी चीजें सर से हम जानेंगे, सीखेंगे आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सर को 2014 में ऑल इंडिया रैंक 47 प्राप्त हुई थी। तो आप में से हर किसी का एक सपना रहता होगा कि हमें 2 डिजिट्स में रैंक लाना है, अंडर 100 अपनी रैंक लाना है। तो सर का 47 रैंक रहा था। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सर का सिलेक्शन जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हुआ था, तो सर रोमन सैनी सर के बैच के हैं। तो लबासना में काफी सारे मूवमेंट्स को और काफी सारी एनर्जी को सर ने शेयर भी ऑब्वियसली किया होगा। वी आर ग्रेटफुल टू यू सर फॉर गाइडिंग ऑल द एस्पिरेंट्स, और आपसे बात कुछ करके काफी कुछ सीखने को हम लोग देख रहे हैं। वेरी वेरी ऑनर्ड टू हैव यू ऑन बोर्ड सर। Thank you, Anuj, and it's a pleasure to be a part of all your endeavors. जी, थैंक्स अ लॉट सर। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगा। काफी बार हम सर स्ट्रेटेजी के अराउंड बात करते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी आप कितनी भी पेपर पे कर लो, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट नहीं है तब तक आप शायद सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आप एग्जॉस्ट हो जाओगे बेसिकली, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये एक इवेंट नहीं है कि आपने केवल एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को निकाला और आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे कि इंडिया के काफी सारे दूसरे एग्जाम्स में होता है। आपको पहले यहाँ पे प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, फिर उससे ज्यादा मेहनत मेंस के लिए करना पड़ेगी, उतनी ही मेहनत इंटरव्यू के लिए करना पड़ेगी। हो सकता है कभी कभी सांप सीढ़ी की गेंद की तरह आपको 99 पे सांप काट ले और आप एकदम मतलब बॉटम पे आ जाओ, मतलब इंटरव्यू से बाहर हो जाओ, दोबारा आपको फिर से शुरू करना पड़े। तो यूपीएससी का एग्जाम इज ऑल अबाउट हसलिंग, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट। सर व्हाट माइंडसेट एज ए लर्नर वन शुड हैव? जैसे हम जब प्रिपरेशन करते थे तो हमारे टीचर हमसे बोलते थे कि यूपीएससी के एग्जाम को निकालने से पहले आप जब ऑफिसर बनोगे, वो ऑफिसर का माइंडसेट आपको प्रिपरेशन के दौरान से चाहिए। तो व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड हैव एज ए लर्नर माइंडसेट के रूप में सर, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते? Okay, so Anuj, I think this is a very relatable question, and it's a very important one. Like, what mindset one should have? I think the biggest strength that a person as an aspirant can have is to have a mindset of never giving up in the first place, because जैसा कि आपने बताया, it's a marathon. It's not one simple objective paper wherein you can say, now I have arrived at a point where I can, be very assured about whatever will be asked and I can answer that. So in that process, you have to keep learning and, always keep reminding yourself to not to give up. And these also required, this mindset is required in the services as well, because during the services also we find so many challenges, we face so many challenges. But if a bureaucrat or an IAS officer gives up at the beginning or in between of whatever changes he wants to bring, he will not be able to make any, I would say, any contribution to the society.
So the idea of never giving up is one of the most important mindsets that person should have. And secondly, and as an aspirant, I will say a person should always remember that why they actually started preparing in the first place. That is one of the biggest motivating factors a person should have. And it's the same also when you are about to give up, just remember why did you start at the first place. So that motivation and that thing will be helping you in the services also. Like many a times we face so many challenges that we also think like this is not worth fighting for. But then again, when we start like 10 years down the line, when I think back, why did I come to this service at the first go? So that is always a helping factor. So the aspirant should always have this mindset of never giving up and always striving for better results. In case you do not find results in the short term, you should not change your goals, rather than you should increase your efforts to reach those goals. And once you have this mindset built up, then you will see positive results that will be there in your life. And I think it will help you during your preparation as well. Got it, sir. नहीं, totally aligned with the idea, sir, कि नेवर गिविंग एटीट्यूड तो आप में होना ही चाहिए. साथ में वो कॉज आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना होगा कि व्हाई डिड यू स्टार्टेड, व्हाई डिड यू इवन स्टार्टेड, व्हाई डिड यू चोज सिविल सर्विस एज अ करियर. और वो अगर आप उसके थ्रू अगर लगातार अपने आप को मोटिवेट करते रहते हो तो यू गेट ए लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. क्योंकि जैसे सर ने भी बताया, मैराथन मतलब 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, कभी कभी ये टाइम भी ले सकती है. तो जो कॉज है वो आपके सभी नेगेटिव थॉट्स पे भारी बेसिकली पड़ना चाहिए कि दिस इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड. और नेवर गिविंग एटीट्यूड तो लाइफ में आपका सिविल सर्विसेज, जैसे सर ने बताया कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान भी और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बाद भी आपको इस नेवर गिविंग अप एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है. सर जैसे मैं भी लर्नर, मतलब जब अपनी अभी भी लर्नर फेज में तो हम सभी रहेंगे, भले ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सीखते तो हमेशा रहेंगे, पढ़ते तो हमेशा रहेंगे. तो मैं भी एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा. जैसे काफी बार ऐसा होता था कि जैसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, तो हिस्ट्री में 80 to 85% ऑफ हिस्ट्री इज अबाउट इवेंट्स एंड जहां पे फ्लो हो रहा है इवेंट्स का बेसिकली. लेकिन जो 15% पार्ट होता है, जैसे कि जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया या भक्ति सूफी मूवमेंट हो गया, यूरोपियन एनलाइटनमेंट रेनेसा हो गया, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पार्ट हो जाता है हिस्ट्री का. मतलब इसमें कभी कभी ऐसा लगता है हिंदी बॉलीवुड मूवी में जैसे पहले होता था कि एक एक्टर की डेथ हो जाती थी और एक एक्टर मान लीजिए हॉस्पिटल में पहुंच जाता था, उसके बाद अगले सीन में वो यही क्वेश्चन पूछता था, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, आप कौन हैं. तो जैसा हिंदी बॉलीवुड मूवी में पहले हुआ करता था, फिलोसॉफी में थोड़ा ऐसे ही लगता है कि मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी. बट यू हैव टू टेक दिस एज चैलेंज, मतलब आपको एक चैलेंज की तरह लेना होगा उसको और गिव अप नहीं करना होगा और अपने आप को इसी तरह से मोटिवेट करना होगा कि अगर ये फिलोसॉफिकल वाला पार्ट भी मैंने उतनी ही अच्छी तरह से कवर कर लिया तो नो वन कैन बीट मी. तो हर एक टॉपिक को आपको एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए. This is what I think, sir. Anything that you would like to add in this, sir? Yeah, that's very true. Like every optional and every subject has like its static part and one that the dynamic part that you are telling about. And I think that is the beauty of this examination. And the mindset part that we were discussing, that we should understand why would they be asking us this question and how is that relatable to us. So I think every optional has a kind of a, as you can say, a current affairs orientation, that people will be asking you those questions only that are relatable to that year. And history and other optionals as well, they all have certain things that even a past event of like 2000 years ago can be related to present day as well. A simple example can be religion and other aspects of the sociological institutions that are there. So this way, I think when we understand that there is a static portion of my optional and syllabus, and then there is a dynamic portion that might be keep changing. So that way, I think if you approach your optionals in this kind of strategy, it will help you during your mains as well as in your interview and obviously prelims too, because it's objective. So it's like always like you can expect very unexpected questions, unpredictable questions. So that way, I think this approach, Anuj, that you have told will be very helpful for the students. सर एक अगला क्वेश्चन, आप जैसे कि ये आपके साथ हमारा दूसरा इंटरव्यू पहले भी मेरे कलीग जो है राहुल, उन्होंने आपके साथ बात की थी. मैं आपके उस इंटरव्यू को देख रहा था और काफी कुछ मैंने वहां से कंज्यूम करा और रिलेट करा.
और एक बात जो वहां पे आपने बताई थी, आई थिंक कि जो आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक अभिन्न हिस्सा रहे थे भोपाल में, आई थिंक सर, तो वहां पे कुछ एक इम्पोर्टेंट वो था जहां पे 70 लाख का जो बजट था उसको आप 10 लाख पे लाए थे। सर ये वर्तमान सरकमस्टेंसेस पे, क्योंकि मैं अभी स्टार्टअप से जुड़ा हुआ हूँ और आई थिंक कि 2022 में ऐसे काफी सारी चीजें हुई हैं जिसके चलते फ्रूगलिटी हैज बिकम अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड। आप जितने दर्शक हमारे फ्रूगलिटी के बारे में नहीं जानते, फ्रूगलिटी का मतलब यह है कि जब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं उसके बाद भी आप सोच समझ के खर्च कर रहे होते हैं, राइट। तो सर ने जैसे वो बजट को काफी कम पे लाए थे। एनीथिंग यू वुड लाइक टू पॉइंट आउट सर, क्योंकि आज की काफी सारे युवा जनरेशन ऐसी भी है जो अपने फाइनेंसेस को भी प्लान करना चाहती है। मतलब अगर वो 500 रुपए की भी एसआईपी खोलना चाहते हैं तो वो उनका इंटरेस्ट रहता है। अभी एक नया मतलब इंक्लिनेशन होना चालू हुआ है। एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव ऑन दिस सर? सेकंड क्वेश्चन की सर, एक और चीज ये है कि काफी बार लर्नर्स ऐसे भी होते हैं जो काफी बार मतलब ऐसा होता है कि यूपीएससी की पढ़ाई काफी एक्सपेंसिव भी हो जाती है, तो आपके पेरेंट्स काफी कुछ उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसको कैसे सीरियसनेस के साथ लेके आप पूरी तरह से कमिटमेंट को के साथ आपको प्रिपरेशन करना चाहिए? एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? I think the financial, the frugality part that you have told, it's totally a function of planning. So the better you plan, you can always use your resources in a more optimal manner. Be it finances or be it even when you are preparing, like your resources are your books. So we cannot just say that in the market all the books can be read, or you can approach all the resources that way. And even when you are services also you are planning, so that way we have always to focus upon the optimal utilization on the resources. And it basically happens when you are doing every step of planning by your own self. So it's a kind of quality of a leadership as well. Like if you have to manage your resources, and once you get into the services you have to manage the resources of the entire district. So we cannot always say that because it is not something personally related to me, so I can plan it in a haphazard manner. So I think a leader should always aim for optimality, and how you can just increase the efficiency of whatever resources that you are using. And in my case it was particularly because in every step I was planning, and on the spot we visit the field. So wherever we can just cost cut the things, we actually planned the same thing, but we had a huge cost cutting because of we have seen the spots, we have seen what was the requirement. It was not a generalized planning that we do. And other question that you asked, that like while we are preparing, there is a huge financial burden on our parents or whosoever is financing. Many people are working also, and then they are preparing also. So in the present, I think because the demand of this examination has increased so much, and there are so many coaching classes and there is so much material there, that if you try to optimize, if you try to approach all of them, you will not be able to get good results. So in here, I think a person should always plan that in which year they are going to appear, and accordingly they should start their preparations in advance. And then if you if you have a good plan in your mind, in your head, if you have clear process like how and in which year you have to appear and how you are preparing, what timeline will be there, because the syllabus is already defined. So I think in that case, if that is your strategy, then you can always clear it in your first attempt, or whatever attempt that you are planning in a very serious manner. So that way, I think the planning portion of this preparation hood is very necessary to get optimal results. वेरी वेल सेड सर। तो लर्नर्स जितने भी आज देख रहे हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सर ने कही, टेकिंग द फुल ओनरशिप, टेकिंग द कंप्लीट ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर हम गवर्नमेंट की रिसोर्सेज को भी मैनेज कर रहे हैं तो वहां पे हमें पूरा अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप को लेना होगा, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है सर। सेकंड, आपने जो रिसोर्सेज को मैनेज करने की बात कही, भले आप खुद की रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, किसी दूसरे रिसोर्सेज को, या अपने पढ़ाई के रिसोर्सेज को ही मैनेज कर रहे हो, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड, द स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग पार्ट बिकम रियली रियली इंपॉर्टेंट। सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक लर्नर की तरह क्वेश्चन है कि जैसे यूपीएससी ने 2021 तक में मान लीजिए स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रहा था, अभी मुझे प्रिपरेशन करते हुए केवल 1 साल हुआ है और मैंने पूरा रिलीजियसली स्पेक्ट्रम को पढ़ा। अब यूपीएससी ने 2022 के एग्जाम में
तमिलनाडु बोर्ड से एक क्वेश्चन पूछ लिया, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे केवल तमिलनाडु बोर्ड के थ्रू मिल रहा है, बाकी आंसर्स मुझे मिल सकते हैं, लेकिन एक यूपीएससी ने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा और तमिलनाडु बोर्ड से वो क्लियरली आंसर हो रहा है। जैसे सर मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के 2022 के प्रीलिम्स के एग्जाम की, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, उसमें 3 स्टेटमेंट थे। उसमें से एक स्टेटमेंट था कि ब्रिटिश ने विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव से परमिशन लेके एक फैक्ट्री खोली थी मद्रास में। अब ये सर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तमिलनाडु बोर्ड में लिखा हुआ है कि विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव वेंकटगिरी से परमिशन लेके, जो कि एक नायक था, ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री मद्रास में खोली। एज ए लर्नर में कंफ्यूज हो गया सर कि कोई बुक इसका आंसर नहीं दे पा रही है, तमिलनाडु बोर्ड दे पा रही है और यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब मैं तमिलनाडु, भले मैंने स्पेक्ट्रम पूरी मेहनत से, पूरी जद्दोजहद से पढ़ ली हो, लेकिन अब मैं पूरी तमिलनाडु बोर्ड को अलग से पढ़ूंगा। आई बिकम रियली अंडर कॉन्फिडेंट कि शायद मैंने गलती कर दी। तो सर ये लर्नर्स में काफी कंफ्यूजन रहता है, बुक्स को वो स्विच करते रहते हैं। आपका इस पे क्या पॉइंट है सर? I think Anuj, the question that you are pointing towards is like I think we can take it as a bias of choices. Like if I am setting up a paper and I have a plethora of books and materials to choose from and to set a few questions from those, so I might sometimes deviate to a certain state board or to a particular region wherein these kind of things are taught in very in depth. But as a general statement, I will say that since modern India, the modern Indian history is like basically covered from your NCRT, and the list of NCRT is very well decorated in your books like Spectrum and many other materials like that. But the basic thought is that we have to know India as a whole. We cannot just see it from the perspective of one particular regional board or even for one particular author's perspective. So I think these kind of questions will always be there wherein you cannot answer them, and there is a particular resource from wherein that question has been asked. But rather than going for each kind of these kind of boards and localized books, I think an aspirant should always hold his ground firm when he has covered like standard books of NCRTs, Spectrum, or whatever book that is being in the market right now. So generally, I think if you change your strategy in between, it will not be very helpful for you. I think rather than covering 10 books about the same topic, we should cover actually different topics from a single book itself. And just to check your preparation if you are in the right path or not, I think one can always go for the previous year's question paper. And it's a general statement like there are 100 questions and nobody expects you to solve all the 100 questions at once. Even in prelims or in mains, nobody expects you to get like 100% marks. So we should always aim in prelims. Our strategy should be to just, clear the cutoff marks, because that is never affecting your ranking in the whole scheme of things. So if you go for like, if it's just an example of science and technology, history that you have given, if I take the example of science and technology or arts and culture, there are so specific questions that if I go for a general book, I cannot find them. It is never like science and tech are never found in, any particular book. But if you pinpoint that this newspaper has published this news and from which they have taken up this article and made up this question, like I am not expected to read all the newspapers or magazines in the market. So I think an aspirant should have a generalized understanding of the things, and you can always relate with whatever you have read. And rather than going for all the resources in the market, I think a person should be very much focused on what they are reading, because we have only one limited factor in the entire scheme of things is time. So rather than investing our time in all the resources in the market, one should have a very focused strategy and a very limited resources to read and try to cover up the entire syllabus in a very short time. Got it, sir. Totally aligned with the idea. Sir, इसमें ये जो confusion का पूरा वो होता है, मुद्दा होता है कि learners end up confusing themselves, following multiple sources, changing their strategies very frequently, not sticking to particular set of books, हमेशा books को बदलते रहते हैं.
इसमें मतलब जितना आज के दौर में जो है यूट्यूब ने कंट्रीब्यूट किया है आपकी प्रिपरेशन को, मतलब आप बहुत हद तक अच्छे तरह से अगर राइट रिसोर्सेज पे जाके अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, तो काफी बार आप खुद को कंफ्यूजन में भी डाल सकते हो। क्योंकि सर काफी बार ऐसा भी होता है कि जैसे ये पर्टिकुलर बुक को ही जो है अपलोड करके इस पर्टिकुलर बुक के ऊपर ही बात की जाएगी कि देखिए यहाँ से यूपीएससी का क्वेश्चन आया, तो आप यहाँ से पढ़ना चालू कर दो। और सर काफी बार ऐसा भी होता है कि जैसे आज तो कंटेंट की एक प्लेथोरा ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल, राइट? एक ही टॉपिक के बारे में आप वीडियोस खोजने चलोगे तो इतनी वीडियोस आ जाएगी कि आप फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे कि कौन सी को आपको देखना है, कौन सी को नहीं देखना है। काफी सारे लर्नर शुरुआत में अपनी प्रिपरेशन को जब करते हैं तो वो यूट्यूब को एक साधन की तरह देखते हैं कि भाई एक शुरुआत हो जाए, जस्ट टू गेट स्टार्टेड विद। जैसे छोटे शहरों में सर होती नहीं है कोई भी गाइडेंस अवेलेबल, सीनियर भी नहीं है, तो फिर वो यूट्यूब का ही सहारा लेते हैं। सर मुझे मैं खुद भी काफी बार देखता हूँ कि ऐसा कंटेंट होता है कि शायद वो उतना उपयोगी नहीं है। अब जैसे रशिया ने अगर न्यूक्लियर हमला कर दिया यूक्रेन पे तो क्या होगा? मतलब काफी बार ऐसा होता है कि सर अगर बुआ के मूंछ होती तो क्या उनको फूफा जी कहते? ऐसा कंटेंट अपलोड करके एक फॉर्मो क्रिएट हो जाता है बच्चे में कि ये वीडियो मैंने मिस कर दी तो गलत हो जाएगा, ओ इस एजुकेटर ने ये वीडियो अपलोड कर दी, मैंने इसको लूज कर दिया, नहीं पढ़ा तो हो जाएगा। उसी चैनल पे एक दिन में 15 करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो रही है और बच्चा सोच रहा है कि हर वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर इसको डाल रहा है। तो वो बहुत फोमो हो जाता है कि यार मैंने इसको छोड़ दिया तो फिर तो मतलब हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा यूपीएससी। तो वो उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करा जाए? Like this word that you have used, FOMO, I think is one aspect in this digital era that everybody has in every stage of their life. Even I see many of my colleagues and seniors, juniors, they are also doing this same thing. And then you think like, I'm not doing this kind of activity and I might be left out from the mainstream. So particularly now, because in the last few years, the video content and online preparation has actually geared up in a very big manner, and it's actually helping the learners and aspirants in a very, in a very fruitful manner. But as you said, Anuj, we cannot just say that one person's videos or one channel's, all the videos will be very useful for me. Like during our times also, there were a few websites who were giving topics like per week, regarding the current affairs and everything. So we used to just go through it, like just slide through the different web pages. But I think we have to understand this thing, that the person who is creating this content also has in his mind his own, I will say popularity, and his own, more subscriptions of channels and more views. So because once you have set a standard and people are following you for their preparation, anything that you will be speaking about will be affecting people. And most of the time it's very fruitful also, but sometimes because time is a very limited factor here, we cannot just blindly go for one person's comments and videos and whatever content they are saying or suggesting a particular book. So we must keep this thing clearly in mind, that the person who is setting the paper has no idea about what is going on in the market, and they have a general view of how the strategy of coaching classes and video online contents, what they are, trying to push towards and propagating these days. But we must always understand that no matter from whom we take the guidance and whom we are getting the mentorship from, that person is not the one who is setting the paper. The questions that we will be asking will be very relatable to the current affairs and the topics that are very commonsensical. Because as an aspirant, I have exhausted all the resources and I have read everything. So I am looking for something new, which gives me an advantage over the other aspirants. But as a question paper setter, or as a even in an interview also, they are not the aspirants. They just read newspaper for once in a day. They are not just digging it like we make notes of newspapers and go through current affairs. So they have a journalistic knowledge of their field. Secondly, in case of optionals or in case of even current affairs, I will say those who are setting the paper, they know the things that is popping into their ears a lot of times. Like the frequency of the topic is more, so they might be having this idea that they can ask questions from that thing. So rather than bal ki khal nikalna, and that good example that you gave, like hypothetical situations that we create, what will happen if Star Wars happens or nuclear war happens, that
that are something I will say that is engaging the aspirants into their loop, but I don't think it will be giving you any good outcome. So an aspirant should always keep his syllabus very handy, and anything that he thinks is not in that 4 pages of syllabus, they should not invest their time in that. And there might be some instances wherein they ask you very random questions, but they are only a few. They might be out of 20 questions in GS paper, there might be only 2 or 3 questions like that. So even if we leave those questions, like in my paper also, Science and Tech asked very, very particular questions about a particular polymer that was there. I had no idea about it, so I didn't even invest my time in that question. Rather than that, I knew I'm not answering that one question, so I have to make up about that question in the answer in which I'm writing. And I scored fairly good. So that strategy, one must understand that you are not there to exhaust all the topics. You are not there to exhaust all the YouTube channels and all the books that are there in market. You are there to complete the syllabus and have a good understanding about going on current affairs and in your optional as well. And I think if you limit yourself to these kind of things, it will be very helpful for you. राइटली सेड सर, नहीं तो वो आप अनएंडिंग लूप में फंस जाओगे और कभी उससे निकल नहीं पाओगे. यू वुड realize it at the later phase कि कितना you ended up giving a lot of time to the things which were not very productive, और वो मतलब आपके सिलेक्शन की डायरेक्शन मदद नहीं कर सकती थी. इसका एक तरीका ये हो सकता है सर कि आप एक जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है जैसे कि 45 मिनट्स का या 1 घंटा सोच के जाओ कि मुझे इतना ही टाइम यूट्यूब को देना है, बाकी मैं सेल्फ प्रिपरेशन ही करूंगा, और मैं केवल 45 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम ही करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स के लिए यूट्यूब पे इन्वेस्ट करूंगा. ऐसा नहीं है कि आप सोच के बिना जा रहे हो और आपका एक दिन में स्केड्यूल नहीं है और you ended up giving 4, 5, 6, 7 hours to YouTube, तो that will be that can be very, very disastrous, especially अगर आपको पेपर का नॉलेज नहीं और आप अगर अपनी प्रिपरेशन के बिगिनिंग फेज पे हो. सर कुछ लर्नर्स ने ठीक है कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हम वहां से वो भी पूछते रहेंगे. सर मेरे कुछ आखिरी सवालों में से एक इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारी टीम ने आपसे पहले भी बात करी थी और आपकी काफी फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, काफी फिटनेस में. आई थिंक सर आपके दिन की शुरुआत सुबह 4 से 5 बजे के आसपास तक होती है, एक लंबी आपकी बाइसिकल राइड भी रहती है, उसके बाद आप काफी सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज में भी अपने आप को इंडल्ज करते हैं. मतलब ये लर्नर्स के लिए समझना काफी जरूरी है कि यूपीएससी के मतलब जब आप एक ऑफिसर बन जाते हो उसकी बाद भी लाइफ में उतना ही हसल और उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, तो आप कैसे टाइम निकालते हैं इसके लिए सर, कैसे मोटिवेट रखते हैं खुद को पूरे वर्क प्रेशर में और उस चीज के बाद भी आप टाइम निकालते हैं. सेकंड, एक प्रिपरेशन कर रहे होते हो आप, तब आपके लिए एक एज अ एस्पिरेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 45 1 आवर देना आपकी खुद की फिटनेस के लिए? Right. So I think I'll answer the second question first, because even when I was preparing, I used to, I was an early waker at that time also. So I used to give 1 hour for my entire fitness regime for that time also. It was nothing like we didn't have a gym there or I couldn't spend that much money. So I used to jog in that park in Rajendra Nagar. So just like 20 minutes of jogging, and then I used to just do some small stretching exercises there. And why is it is necessary? Because it's a simple biology. Your brain needs oxygen. The more oxygen your brain will have, the more oxygen that you will have in your blood, it will actually help to revitalize your entire learning process. We should always remember that it is a memory game. Entire syllabus of UPSC is so huge that if you cannot keep your facts in your head, then I don't think that it will be very helpful for you, and it will somehow affect your preparation in a negative way. Secondly, when you go for mains or even in prelims, it's a huge, I will say, sitting task. You have to sit from 9 to 12 in mains, and you have to write constantly. You have to have your posture like that. And if you have any pain in your body or you're not able to, have that kind of, I will say, mindfulness at that time, it will anyhow affect your, preparations and the outcomes as well. So if there is only the fitness thing in the aspirant part, I'm not saying that you should be a very fitness freak, but at least you should be aware that what your body is requiring. If you are having a normal lethargy in your daily routine, I think it will affect your preparations in a negative manner. And once you start your day with, having some
pump up, sweating and everything, and then when you sit down to study, I think the focus is better, and you are able to grasp things in a better manner, in an early manner as well. So that way, I think all the aspirants should have at least one physical activity in the daytime. Even in the evening, if you can go for a walk, but it is something that is essential part in your life for the entire, I will say, till whatever time you can continue. And as you asked me about my personal one, coming to the services, because these services demands a lot of physical activity. The first 15 years you are into a field. Sometimes there are certain disaster management activities that happen, like that you have to stand on your feet for entire days. You cannot even go back home. So once you are not able to handle that stress physically, also it will somehow affect your decision making also, and you will not be able to survive long on the field for that time. So in general also, a person should aim for having a good health and a good mindfulness, and doing some physical activity on a regular basis will definitely help you in this one. वेरी राइटली सेड सर. इनफैक्ट जब मैंने अपनी इनिशियल डेज में कुछ वर्कआउट वगैरह करना चालू किया था, तो आई फेल्ट दैट आई एम एबल टू गिव अ लॉट मोर टाइम टू माय स्टडीज, आई एम एबल टू कंसंट्रेट बेटर. और उसके साथ साथ शायद मतलब मेरे साथ काफी बार ऐसा होता था कि वो जो आधा या 1 घंटा अनइंटरप्टेड होता था, उसमें मैं काफी अपनी जो पढ़ाई होती थी उसको भी स्ट्रेटेजाइज कर पाता था. तो वो टाइम मतलब फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ जब आप कर रहे होते हो, तो वो एकदम अनइंटरप्टेड टाइम होता है, जिसमें आप अपने गोल्स के बारे में सोच रहे होते हो, काफी मोटिवेटेड रहते हो. और जैसे आपने बताया, यूपीएससी की जो सर्विसेज होती है, काफी काफी जितना मेंटल डिमांड रहता है उसका फिजिकल डिमांड भी रहता है. आपको कभी कभी मतलब जैसे बताया सर ने, दिन भी लग जाते हैं पूरे पूरे. कभी आप किसी चीज में आपको इंडल्ज यदि होना पड़ता है, तो it is an examination or a job which required that particular aspect of your life also. So, sir, we had a great conversation with you and got to know a lot of things from you. और कुछ भी ऐसे फाइनल चीजें जो आप एस्पिरेंट्स को बोलना चाहोगे who are appearing the civil service exam in 2023, अभी केवल 9 महीने बचे हुए, 8 से 9 महीने, क्या करना चाहिए सर, कैसे करना चाहिए? I think already those who are having guidance from Anuj, they are going in the right direction, and just to propel them into even a faster way to achieve their aim. I think the more focused the person is, the better results they will get. And keep your resources very limited, because there is such a plethora of resources in the market that you cannot, in one lifetime you cannot read all the books. Be it 1 year, तो बहुत ही छोटा time हो जाता है. And since those who are appearing in 23, there is a lot of time right now. और अपने syllabus को time line के साथ आप distribute कीजिए, so that you can actually go for 2 or 3 readings, so that you get to know your syllabus better. And I will always say this thing, that read, rest and revise should be your strategy in the entire services and entire preparation. And once you are confident enough that you have gone through the entire syllabus 2 to 3 times, and I think it will be helping you in your answer writing as well as in your prelims also. And I think आप सभी लोग पूरे determination के साथ and honestly do your hard work, and you will get the best of the results. This is a very easy examination, I will say, because generally in 10th and 12th board we used to score 90% and above, even 80%, 70%. But in this exam, even if you score 40 to 50%, you are into top 50s and top 100s of the rank. So always keep this reminder in your head, that I don't have to write all the answers in a 100% manner. I have to just be in that zone wherein I can comfortably answer 80% of the questions in a very effective manner. So just leave those 20% things if you are not able to get a hold on them, and be very confident about your preparations. And I think you will be doing wonderful. Thank you. Thanks a lot, sir. It was amazing interacting with you. Got to learn a lot of things from your experience. प्रिपरेशन के दौरान का और ऑफिसर बनने के बाद का भी सर. We would also catch up sometime soon, sir, on different issues. Thanks a lot for your guidance. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.